Students, I'm Amit Gill, clinical microbiologist, and today we are going to cover the subject on the structure of eye. So, before going over to the subject of eye, मैं आपको सबको एक बात के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स एंड कि जो आप सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन वीडियोस को इन वीडियो सेशंस को आप मल्टीपल टाइम्स बार बार वॉच करो सो दैट आपको सारी वीडियो ये अच्छे से समझ आ जाए। जब आप एक सब्जेक्ट को ओवर एंड ओवर रिपीटेडली स्टडी करोगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा। सो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई इज अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन capable of receiving visual image which are then carried to the brain। अब हमारे आई एक स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन है, जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं उसमें से एक सेंस है हमारा आई का। सो आई भी एक सेंसरी ऑर्गन है जिसके हेल्प से विच हेल्प्स अस इन सीइंग द थिंग्स। हम विजुलाइज करते हैं, वी कैन विजुलाइज ऑल द थिंग्स, वी कैन वॉच, वी कैन सी ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आई। सो coming over to the shape of the eye, जो eye की shape होती है, it is not completely spherical, but it is almost spherical. It is not perfectly spherical, it is almost spherical in shape. And the diameter, the size of our eye is its diameter is 2.5 centimeter, or we can say 25 mm. And this is the diagram I have made for you. This is optic nerve. This is the optic nerve. These brick reddish lines, these all are optic nerves. The outer layer is known as the sclera, and this is the posterior part, the backside of our eye. And I'll write over here, this is posterior part of our eye, and this is the anterior part or visible part, or you can say it this is front part of our eye. This is the pupil. This the outer layer is known as sclera. Then the middle layer is the reddish one is known as choroid, and the most inner layer is known as the retina. And the pupil is just between the ciliary body and the sensory ligaments. These are the sensory ligaments, and the innermost fluid is known as the vitreous body. So this is the structure of eye. आप होप ये आपको समझ आ चुका है कि जो सबसे अंदर वाला जो फ्लूइड है आई का उसे विट्रस बॉडी बोलते हैं, इसे सीलियरी बॉडीज बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी लिगामेंट, कोरोइड, रेटिना। कोरोइड होता है मिडल लेयर, रेटिना होता है मोस्ट इनर लेयर, स्क्लेरा होता है द मोस्ट आउटर लेयर। और ये दोनों आयरिस पार्ट है, आयरिस के जो बिल्कुल बीच में पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्यूपल, जिसे हम देख सकते हैं। सो इतना हाफ फ्रंट वाला जो हाफ पार्ट आई का बिल्कुल फ्रंट वाला, दिस इज नोन एज द एंटीरियर पार्ट और द विजिबल पार्ट ऑफ आई। अब जो बैक साइड वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, जिसमें ऑप्टिक नर्व, स्क्लेरा, क्लोरोइड, रेटिना एंड विट्रस बॉडी कवर हो रहा है। आई होप दिस कंसेप्ट, दिस डायग्राम इज क्लियर विद यू। अब आगे हम चलते हैं। इस जो मैंने आपको डायग्राम्स के स्ट्रक्चर बताया इसके डिटेल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द डायग्राम, the eyeball is made up of 2 parts. अब eyeball has 2 parts. eyeballs के 2 parts होते हैं हमारी आंखों के, the anterior part, the vesical part और the front part जो मैंने आपको previously बताया है, and another is the posterior part और जिसको हम back side part बोलते हैं। anterior part में it is the small 1/6 part of the eye। जैसे आंख का 6 हिस्से होते हैं आंख के, उसका 1/6, 1/6 part of the eyeball। And the posterior part is the largest part, 1/6 part of the eyeball. Sorry students, it is not 1/6. The posterior part is the largest part, and it is the 5/6 part, 5/6 part of our eyeball. And it is the largest area of the eye and backside of our eye, and it is located in orbital cavity, and it is made up of bone or eye socket. सो यू मस्ट हैव सीन द स्कल, जो जिसको हम खोपड़ी कहते हैं हिंदी में। सो जो उस खोपड़ी के बीच में 2 आई सॉकेट्स होते हैं जो बोनी, इट इज़ बोनी, एंड उन 2 सॉकेट्स के बीच में, जो खोपड़ी के बीच में जो बोनी सा पार्ट होता है, तो आई बॉल्स उसके अंदर फिट होती हैं, आई बॉल्स उसके अंदर फिक्स हुई होती हैं। एंड बिटवीन आई एंड बोनी पार्ट, अब उस बोनी पार्ट और आई बॉल के बीच में जो स्पेस होती है वो एक एडिपोज टिश्यू, इट इज फिल्ड विद द एडिपोज टिश्यू which is known as fatty tissues, and it provides cushion to the eyes and protection from injury. So it provides the cushion, like कोई भी इंजरी होती है, कोई भी झटका आंखों में बाई चांस कुछ लगता है,
कभी कुछ एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट, तो इट प्रोटेक्ट्स द आई कि आई बिल्कुल जो सॉकेट्स होते हैं इट इज मेड अप ऑफ बोन, तो आई सीधा उसके बीच में क्रश ना हो, तो उसके बीच में एक इट वर्क्स लाइक अ स्प्रिंग, somewhat like spring, because it works as a cushion, and it protects the eye from injury. And our eye is connected in orbital cavity with the help of ocular muscles. अब जो हमारे आई बॉल्स हैं वो उन कैविटीज के बीच में जो स्कल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रफ आई एम मेकिंग जस्ट रफ डायग्राम, दिस इज स्कल, ह्यूमन स्कल, एंड उसके जो बीच में स्कल के बीच में दो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड दिस इज नोज बोन, राइट। सो इनके बीच में आईज होती हैं, और इनके बीच में जो स्पेस होती है, दिस स्पेस इज फिल्ड विद एडिपोज टिश्यूज और फैट टिश्यूज, सो दैट अगर कुछ झटका लगे दिस आई बॉल डजेंट सीधा उसके साथ हिट ना हो बोन के साथ, और एक कुशन बन जाता है बीच में इसके। एंड अब द मसल्स विच कनेक्ट दीज आई बॉल्स विद दिस आई सॉकेट्स, द मसल इज नोन एज ऑकुलर मसल। अब आगे है, आई इज सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व। अब मैंने डायग्राम भी प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडेड यू डायग्राम एंड द ऑप्टिक नर्व, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ऑप्टिक नर्व। सो जो ऑप्टिक नर्व सप्लाई करता है आईज को सारे ब्लड फ्लो, एंड जो हमारे ब्रेन से कनेक्शन होता है वो ऑप्टिक नर्व सप्लाई करता है। नाउ स्टूडेंट्स, as we proceed, we are coming over to the wall of eyeball. There are three layers of layers of tissues. सो अब डायग्राम मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था कि उसकी आउटर लेयर होती है स्क्लेरा, एंड मिडल लेयर होती है, जो इनर लेयर आउटर लेयर के साथ ही कनेक्टेड होता है प्यूपल एंड देन रेटिना। सो अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी इजी वे, सो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। द आउटर लेयर जो आप डायग्राम में देख रहे हो, जो वो आउटर लेयर इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। अब जो आउटर लेयर है, बिल्कुल आउटर लेयर है, उसे हम बोलेंगे आउटर फाइब्रस और स्क्लेरा एंड कॉर्निया। इट इज द मोस्ट आउटर पार्ट एंड द फ्रंट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑफ अवर आई। अब हमारे आई का जो बिल्कुल फ्रंट पार्ट होता है जिससे हम देखते हैं, दैट इज द आउटर पार्ट, एंड इट इज और जो फ्रंट पार्ट पे जो मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइडी मेम्ब्रेन होती है हमारी आंखों में जो सामने से बिल्कुल देखते हैं, दैट इज नोन एज स्क्लेरा एंड कॉर्निया। एंड उसके बाद हम जो बिल्कुल आउटर लेयर है, जो आप डायग्राम में ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग है, जो बिल्कुल आउटर लेयर है, दैट इज नोन एज स्क्लेरा। सेकेंड मिडल वेस्कुलर मिडल लेयर है, जो रेडिश कलर में मैंने डायग्राम में आपको शो की है। मिडल लेयर और दिस और यूवियल ट्रैक्ट, इट हैज़ द रिच ब्लड सप्लाई, इट हैज़ कोरोइड सिलरी बॉडी। देन अब इसके स्ट्रक्चर, वी आर कमिंग ओवर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मिडल आई, इट इज नोन एज कोरोइड सिलरी बॉडी, देन iris. Now between the iris is the circular aperture known as pupil. So pupil, this circular aperture pupil is connected to these ciliary bodies. Between the ciliary bodies, just behind the pupil is lens. Just behind the pupil you can see the green shaded one is known as, this is the lens. This is the diagram of lens. And the third part is the most inner nervous tissue layer, most inner layer of eye, inner structure of retina. So the inner structure is known as retina. You can see in the see in the diagram, the inner structure is known as retina, and inside retina is a fluid. You can see the inner cavity of the eye, the eyeball, it is filled with the fluid, and inside the retina is a fluid which is known as vitreous body. You can call it vitreous body. This fluid is known as vitreous body, and in the front fluid present between cornea and iris is aqueous humor. And this is the part, this I have shown in the diagram, the aqueous humor written in the blue color. So the front fluid present between the cornea and the iris. So the fluid which is between the cornea and the iris, as you can see in the diagram, that fluid is known as aqueous humor.